morning students, class 10. Today we had discussed about the arithmetic progression concept and I had told you some example also. And today I will give you the solutions of some of the more questions of exercise 5.1 so that the concept will get clear to you completely and you will be able to solve the whole exercise. It is a very important exercise because it will teach you the basic concept of solving, that how to find A, how to find D, how to form an AP. Okay, so don't leave any of the question of this exercise and do all the questions in a very proper way. If you will see question number 1, I am just taking it theoretically. In this question we have to tell that some situations are given, 4 parts are given, that in which part AP will be there and why. See, in first part, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer, means 15 यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया. उसके बाद जितने भी आएंगे टर्म सबके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 8 का. इसका मीन्स है इट इज़ फॉर्मिंग एन AP. ओके. सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम. नो, ये केस AP का नहीं है, क्योंकि 1/4 जब जाएगा उसके बाद जो निकल के आएगा ये एक तरीके से बिल्कुल डिवाइड में जाएगा. सही है. तो इसका जो पार्ट निकल के आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. नाउ सी द पार्ट थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाई रुपीज़ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. इसका मीन्स ये है कि फर्स्ट पार्ट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 150 है. उसके बाद जितने भी टर्म आएंगे उन सभी में 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब कौन है, ये AP. अब आ गया समझ में. Means in this question number 1 you have to just think that if there is a common difference between the terms, okay, if the difference is coming same then it is forming an AP, otherwise it is not forming an AP. Question number 2, I had told you yesterday I will give you some more solutions. In this what we have to do, we have to in this question part first term is given, common difference is given and we have to write the first 4 terms of the AP. Okay, I will give you some more solutions. We can say question number 2 part 4. Question 2 part 4. See what it is saying. A value is -1, D value is 1/2. हमें A भी पता है, हमें D भी पता है. And this thing I had told you yesterday. The first 4 terms of the AP are A plus D, A plus 2D, A plus 3D. So what we have to do, A की जगह A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और D की जगह D की, जहाँ पे भी ये आ रहे हैं, एंड जस्ट सॉल्व इट इन ए वेरी प्रॉपर वे. सो A is -1 here, -1 plus 1/2. What we have to do here, we have to take the LCM. 2 -2 plus 1, it will become -1/2. Here see, -1 plus 2 into 1/2. 2 is cancelled by 2, -1 plus 1, answer will come 0. Here -1 plus 3 into 1/2, ये क्या बनेगा, -1 plus 3/2. So now you have to take the LCM. -2 plus 3, answer will be 1/2. Is it clear? Now hopefully question number 2 is clear. So you have to solve it in a very proper way and I will solve one more part, part 5th, but first of all write it. Okay, so we now see part 5th on the board. In the part 5th, A is how much, -1.25. okay, D is -0.25. So what we have to do, we have to again do the same work. We have to write the first 4 terms of the AP. A is how much, -1.25. -1.25 plus -0.25, -1.25 plus -0.25 and its addition will come -1.50. okay, see the part third, -1.25 plus 2 into -0.25, -1.25 plus -0.25 into 2, 0.50. now minus plus but with the minus sign, so it will become 1.75. okay,
here also minus 1.25 plus 3 into minus 0.25 minus 1.25 plus minus 25 3s are 0.75. Okay, now just add them. 5 plus 5 10, 7 plus 2 9 and 1 10, 1 plus 1 2. So this is our needed answer. Is it clear? Note it. Okay, so now see on the board question number 3. In question 3, what we have to do for the following APs, means AP is already given here. We have to write the first term and the common difference. Okay, means suppose it is our first part. AP is 3, 1, minus 1, minus 3. So what is the first term? First term is A. And we have to find out one more thing, common difference. Yesterday I had told you the formula of finding the common difference is A2 minus A1. जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो. स्टार्टिंग के टर्म्स है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है. सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर कॉमन डिफरेंस 1 minus 3. आंसर विल कम minus 2. सी वन मोर पार्ट. Okay, let us do part 4th. So AP in part 4th is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. Okay, so first term is 0.6 and the common difference is A2 minus A1. This is the formula. Okay, so second term is 1.7, so we have to subtract 0.6 from 1.7. 1.7 minus 0.6, our answer will be 1.1. Okay, note it. Student, now see on the board question number 4. Question number 4 is saying which of the following are APs. Means यहाँ पे जो भी given है, first of all we have to tell that they are APs or not. Second thing, if they form an AP, find the common difference and they write 3 more terms. So student, what we have to do? First of all हमें मालूम करना है ये AP है या नहीं. AP कब होगी? If the terms are having the same common difference, if the difference between the terms is common, same. Second thing, अगर ये AP है, then we have to tell the कि common difference कौन है यहाँ पे, and we have to write 3 more terms. Just see part first of question number 4. Some series is given, yes, 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16 and so on. So first of all, what we have to do, we have to find out the common difference, we have to find out the difference between every term. And if that difference is common, then it means they all are having the common difference, then they will form an AP. Okay, D1, subtract it, 4 minus 2, 2. Again find D2. और ये काम जितने भी टर्म्स दे रखे हैं ये सबके लिए करना होगा. ओके, 8 minus 4 कितना आया यहाँ पे 4. D1 is not equals to D2, therefore it doesn't forms an AP. अगर ये AP होता तो D1 और D2 की वैल्यू क्या आती? सेम. मैंने कल बताया था कि जो डिफरेंस निकल के आता है वो कॉमन होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस. अब अगर डिफरेंस ही कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मीन्स है कि ये हमारी AP नहीं है, ये कोई और ही सीरीज है. ओके, नोट इट. ओके स्टूडेंट, नाउ सी पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ भी सीरीज दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट इट इज़ एन AP और नॉट. सो सेम वर्क वी हैव टू डू. यहाँ से आएगा D1, यहाँ से आएगा D2. इतना काम करो पहले. D1 5/2 minus 2. सो व्हाट वी हैव टू टेक हियर LCM. 5 minus 4, 1/2. Now again find D2. 3 minus 5/2. Again we have to take LCM. 2. 6 minus 5. Its answer came 1/2. One more time we have to do it. D3. 7/2 minus 3. Again how much? 7 minus 6. 1/2. Since D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to D, means इन सब की वैल्यू क्या है? सेम ही है ना. Therefore it forms an AP and common difference is जो सेम आया हर जगह, that is 1/2. Is it clear now? And now what we have to do?
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी नेक्स्ट 3 टर्म्स. अभी वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 में हमने आगे के 4 टर्म्स निकाले, तो यहाँ पे कितने निकालने? 3. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. फॉर फाइंडिंग द टर्म्स वी नीड 2 थिंग्स. टर्म निकालने के लिए 2 चीज़ हमें पता होनी चाहिए. एक तो डी की वैल्यू दैट वी नो, एंड ऑल्सो अबाउट ए. सो ए इज 2. अब कैसे निकालेंगे 3 टर्म्स? ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. मीन्स इट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. आगे वाला कौन होगा? ए प्लस 4d, देन ए प्लस 5d, देन ए प्लस 6d. So just substitute the value in place of a and d. 2 into 4 into 1 upon 2 plus 4 into 1 upon 2. 2 2 is 4, 2 plus 2 4. Here 2 plus 5 into 1 upon 2, 2 plus 5 upon 2, we have to take the LCM. 1 2 is 2 2 is 4, 4 plus 5 9 upon 2. Here also 2 plus 6 into 1 upon 2, 2 3 is 6, 2 plus 3, answer will come 5. Is it clear now? So what you have to do? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? AP मालूम करनी है. AP मालूम करने के बाद कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो वो की AP होगी, वरना AP नहीं होगी. जब आपके पास D की वैल्यू होगी, A की वैल्यू होगी, देन यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स. और नेक्स्ट 3 टर्म्स की लेने कैसे हैं वो आपको काउंटिंग करनी है. ऐसे, ये पहला था A, ये A प्लस डी, ये A प्लस 2d, ये A प्लस 3d. तो आगे वाला कौन होगा? A प्लस 4d, A प्लस 5d, A प्लस 6d. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू okay, complete question 1, question 2, question 3, and you have to try all the questions of question number 4. In my next video I will give you some more solutions from question number 4, but you have to first of all complete it up to part 2nd and try the remaining of the questions. Is it clear? Thank you very much.